Welcome students of class 5. I am your English teacher. Today is Thursday 19 November 2020. My dear little kids, hope you all are fine. Students, today we are going to do the reading and explanation of unit number 5 from Broadway workbook Fatma Shah. As you know that in our previous lecture we had started this unit and we have done the starter and the drill of difficult words and their meanings, and today we will read this unit. Now class, open your books, keep the books in front of you and open page number 39. लास्ट टाइम स्टार्टर में हमने पढ़ा था कि फातिमा शाह जो हैं वो ब्लाइंड थी और उन्होंने एसोसिएशन बनाई थी ब्लाइंड पीपल की पाकिस्तान में, और इसके अलावा वो ख़वातीन के राइट्स के लिए भी काम कर रही थी जिसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। अब हम उनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी ज़िंदगी की आप बीती के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हुआ ये सब कुछ। When I realized I would be completely blind, I was in deep despair. I isolated myself in my room and was reluctant to meet anyone except my closest relation and a few friends. I have told the meanings. मैंने आपको कल जो लेक्चर डिलीवर हुआ था उसमें इनके मीनिंग्स भी बताए थे। डिस्पेयर मीन नाउमीद हो जाना, आइसोलेटेड मीन अपने आप को किसी एक कमरे में बंद कर लेना, रिलक्टेंट मीन बेदिली से नाउमीदी से। तो जब फातिमा शाह को ये महसूस हुआ एक दिन के पहले तो उनकी आई साइट थोड़ी थोड़ी वीक हो रही थी, और जब टोटली वो ब्लाइंड हो गई उन्हें पता चला कि वो बिनाई से बिल्कुल महरूम हो गई, अब वो नहीं देख सकेंगी कभी भी, तो वो बहुत ज़्यादा नाउमीद हो गई और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। और फिर उन्होंने सिर्फ उन लोगों से मुलाकात रखी जो उनके करीबी दोस्त थे या उनके रिश्तेदार थे, इसके अलावा उन्होंने बाकी सब लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। वन डे आई वॉज टोल्ड दैट अ लेडी हैड कम टू सी मी. Then I heard someone laugh and a cheerful voice said, and एक दिन वो कह रही हैं कि जब मुझे पता चला कि खातून जो है वो मुझसे मिलने के लिए आई है, और मैंने सुना कि वो बहुत खुश अखलाक और बहुत खुशी से आवाज़ में बोल रही थी, हेलो, आई एम डॉक्टर एस्पेला ग्रैंड, आर यू डॉक्टर फातिमा शाह? यस आई रिप्लाइड. उन्होंने मुझसे हेलो बोला और कहा कि क्या फातिमा शाह? मैंने जवाब दिया यस. डॉक्टर ग्रैंड टोल्ड मी दैट शी वॉज एन अमेरिकन एंड दैट शी वॉज ब्लाइंड. She was on a tour of the world and had just been to 25 countries. Now she was visiting Pakistan. डॉक्टर ग्रैंड ने मुझे बताया कि वो एक अमेरिकन है और वो ब्लाइंड है मतलब बिनाई से महरूम है, और हाल ही में उन्होंने तकरीबन 25 कंट्रीज़ 25 मुल्कों का पूरी दुनिया में वो गई हैं, 25 मुल्कों की उन्होंने सैर की है और अब वो पाकिस्तान आई हैं सैर करने के लिए। नाउ टर्न द पेज एंड लुक एट पेज नंबर 40. आई हैव जस्ट डिलीवर्ड अ लेक्चर टू द स्टूडेंट एट अ कॉलेज, शी सैड. और उन्होंने मुझे बताया कि मैं कॉलेज में गई थी जहाँ मैंने लेक्चर स्टूडेंट्स को कुछ बताया. Your friend, the principal, told me all about you. She said that you have a degree in medicine, that you are a well-known social worker, and that you have recently become blind. और उन आपके फ्रेंड्स ने, आपके जो दोस्त हैं, प्रिंसिपल है, उन सब ने मुझे आपके बारे में बताया, और उन्होंने मुझे बताया कि हाल ही में आपने मेडिसिन की डिग्री ली थी और उसके बाद आप बहुत मशहूर सोशल वर्कर मतलब समाजी कारकुन थी, लोगों की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन अभी रिसेंटली हाल ही में जो आप हैं वो बिनाई से महरूम हो गई हैं. She also told me that you are in a state of deep depression. I have been looking for someone just like you. उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त आप बहुत ज़हनी दबाव में हैं, बहुत टेंशन में, परेशानी में, और मैं आप जैसे किसी इंसान से इस तरह मिलना चाह रही थी. Who are you traveling with? I asked. Who are you traveling with? I asked. मैंने उनसे पूछा कि आप सफ़र करने किसके लिए साथ की थी, कौन आपके साथ था? With Oscar, she answered. Is Oscar here with you now? I asked her, wondering whether Oscar was a person or a dog. वो कह रही हैं कि मुझे नहीं पता चला, मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि ऑस्कर कौन है, क्या वो आपके साथ आया आज भी? उन्होंने कहा यस. क्या वो एक डॉग है या फिर एक इंसान है? ऑफ कोर्स, शी आंसर चीयरफुली. हेयर मीन ऑस्कर. उन्होंने कहा हाँ वो मेरे साथ है, बहुत खुशी से जवाब दिया. एंड विद दैट शी पुट अ केन इन टू माई हैंड. Oscar is what I call my white cane which goes everywhere with me. How old are you? I asked.
وہ کہہ رہی ہے آسکر جو ہے انہوں نے وہ، میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے وہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور آسکر جو ہے یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ایک وائٹ کلر کی چھڑی تھی جو بلائنڈ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یوز کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنی بلائنڈ جو چھڑی تھی جس کا نام کین تھا، اس کو انہوں نے آسکر کا نام دیا گیا تھا، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 60 شی ٹولڈ می، انہوں نے مجھے جواب دیا کہ 60 سال۔ It was at that moment that something stirred within me. I was then 45 years old. I thought to myself, here is an old lady of 60, totally blind, who is going around the world absolutely alone with nothing but a can for support. اسی لمحے میرے اندر ایک چیز، اسی لمحے کسی ایک چیز نے مجھے اندر تک ہلا دیا، اور میں نے دیکھا، سوچا کہ میں تو 45 ایئرس کیوں، 45 سال کی ہوں، اور وہ آلریڈی جو ہے وہ 60 سال کی ہے، ٹوٹلی بلائنڈ ہے۔ میں تو ابھی ریسنٹلی حال ہی میں بلائنڈ ہوئی ہوں، بینائی سے محروم ہوئی ہوں، لیکن وہ تو ہمیشہ سے ہی بلائنڈ تھی۔ اس کے باوجود وہ بالکل اکیلی دنیا کے ٹور پر بھی چلی گئیں، اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، بس ان کے پاس ان کا ایک سہارا تھا جو ایک وائٹ چھڑی تھی۔ شی از کام، سیٹسفائڈ اینڈ چیئرفل، وہ بہت پرامین تھی، مطمئن تھی، خوش تھی۔ سو وائی ایٹ مائی ایج ایم آئی ویسٹنگ مائی لائف سٹنگ ان سائڈ اے کلوزڈ روم؟ تو کیوں اس عمر میں اپنی لائف، اپنی زندگی ایک بند کمرے میں ضائع کر رہی ہوں؟ You have been an active social worker, Dr. Grant continued. Now you know that it's like to be blind as well. You are therefore the best person to provide leadership to the blind in your country. انہوں نے مجھے اپنی ڈاکٹر گرانٹ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم تو ایک بہت ایکٹیو سوشل ورکر ہو، اور اب سب جانتے ہیں کہ تم بلائنڈ بھی ہو۔ اس طرح اگر آپ بلائنڈ ہیں تو آپ ان لوگوں کے بارے میں جو بینائی سے محروم ہیں، ان کے بارے میں، ان کی پرابلمس کے بارے میں اچھی طرح جان سکتی ہو کہ انہیں کون کون سی پرابلمس جو ہے فیس ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے ملک میں ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے کام کر سکتی ہو، ان کی مدد کر سکتی ہو۔ You need to form an association of the blind in this country which will work on the basis of self-help rather than چیریٹنگ۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایسوسیشن، ایک تنظیم بنائیں بینائی سے محروم لوگوں کی اپنے ملک میں، اور پھر ان کو ان کی اپنی مدد آپ کے تحت کرنے کی ان کو ٹریننگ دیں، اور اس کے علاوہ چیریٹی سے بھی ان کی مدد کریں۔ I thought about this for a while and suddenly I knew that I could do it and that I would do it. اور میں نے سوچا، اسی لمحے اچانک سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، اور میں یہ کام کروں گی۔ A ray of light had appeared at last in the darkness that surrounded me. اور اسی وقت اندھیرے میں روشنی کی کرنیں جو ہے مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوئی، ظاہر ہوئی۔ مجھے لگا کہ اندھیرے میں ہر طرف روشنی ہو گئی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، now our lesson is completed and you try to read this lesson at your home. اوکے، اللہ حافظ۔